वेलकम इन्वेस्टर्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो ये वीडियो में विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एसएमई कंपनी। और ये एसएमई कंपनी का 2014 में सिर्फ 14 करोड़ का रेवेन्यू था, विच दे हैव स्केल्ड 20 टाइम्स इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। यानी लगभग 2020 तक उनका जो रेवेन्यू था, दे हैव रीच अप टू 300 करोड़। और उसके बाद में पैंडमिक आ गया एंड देयर होल ऑपरेशंस गॉट डिसरप्टेड। बट मोर इंटरेस्टिंगली यदि आप देखोगे तो 2025 के कंपैरिजन में 2026 फाइनेंशियल ईयर में दे हैव अगेन ग्रोन देयर रेवेन्यू बाय 50% एंड लगभग उन्होंने 315 करोड़ के जो रेवेन्यूज है वो पोस्ट किए हैं। एंड नेक्स्ट ईयर यानी 2027 फाइनेंशियल ईयर के लिए दे आर प्लानिंग टू पोस्ट द रेवेन्यूज ऑफ अबाउट 500 to 550 करोड़। ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग कंपनी है। इसकी जो शुरुआत है वो 1998 में शुरू हुई थी, और जब भी उनकी जो शुरुआत है वो सिर्फ एक सेगमेंट में हुई थी। एंड टिल 2019 उनका जो फोकस था वो सिर्फ एक ही सेगमेंट का था, जो रेलवेज का सेगमेंट था। एंड इसी वजह से उनको काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े ड्यूरिंग द कोविड। बट आउट ऑफ दिस चैलेंजेस दे हैड देयर लर्निंग, एंड उन्होंने उनका जो बिजनेस है वो डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। तो यदि आप देखोगे तो उनके करंटली 3 मेजर सेगमेंट्स है जिससे कंपनी के रेवेन्यूज आते हैं। एक जो फर्स्ट सेगमेंट है जिससे कंपनी के सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज आते हैं, दैट इज रेलवे सेगमेंट। सेकेंड यदि आप देखोगे तो दे हैव एंटर्ड इनटू एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर इन 2020। एंड उनका जो थर्ड सेगमेंट है दैट इज रिलेटेड टू द रिन्यूएबल एनर्जी। ये जो एसएमई कंपनी है उसके पास करंटली जो मैन्युफैक्चरिंग का कैपेसिटी है वो लगभग 50,000 स्क्वायर फीट के आसपास उनका टोटल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। बट दे हैव रिसेंटली एक्वायर्ड अबाउट 14 एकर्स ऑफ न्यू लैंड, जहां पर दे विल बी एक्सपांडिंग द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी फ्रॉम 50,000 स्क्वायर फीट टू मोर देन 2.5 लाख स्क्वायर फीट्स। और ये जो कंपनी है वो करंटली मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड कंपनी है। बट इन नेक्स्ट 5 ईयर्स उनका जो विजन है वेयर दे विल बी ट्रांजिशनिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू मोर टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी। और ये कंपनी का नाम है जिसके बारे में हम ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसका नाम है एयरफ्लो रेल टेक्नोलॉजी। ये एक एसएमई कंपनी है, बट दे आर स्केलिंग अप देयर रेवेन्यूज वेरी रैपिडली। एंड अलॉन्ग विद द एंट्री इनटू डिफेंस एंड एरोस्पेस देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिन्स एज वेल। ये कंपनी के जो जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर मणिकंदन, उनके साथ मैंने एक इंटरेक्शन किया था। तो यहाँ पे पहले उनसे ही समझते हैं कि ये जो कंपनी है उसकी शुरुआत कैसे हुई थी। This Airflow rail technology was incepted in the year 1998, Right. by founder director Mr. Venkatesh, predominantly to concentrate on HVAC industry. Then in early 2000, 2001, we have shifted our focus towards the railway segment. We have started with one particular product for the air-conditioned coach through a project called Jamshedapti. And then we increased our product line from one product to 500 product in 5 years between 2001 and 2005. Right. Our USP was to convert all the mild steel product to a aluminum and the stainless steel product. Okay. Thereby we can reduce the weight of the coach and increase the efficiency of the coach. And also we have introduced a lot of powder coating concept into the system instead of mild steel painted systems. So that was our USP. Right. And we were organically growing between 2001 and 2005. And 2005, I officially become the director of the company. Then after 2005, we got a major contract from ICF. Okay. For a project called MRVC, Okay. Mumbai Railway Vikas Corporation. So before going ahead, can you just introduce to the viewers what you mean by the products? What kind of a products are we have developed historically, starting from say 1998? How we scaled up and added more products, as you mentioned, like we started with a single product and probably we have more than 500 products right now. Yeah. So what you mean by the products? What actually goes inside the bogies or inside the trains? And then we have the Vande Bharat and upcoming future trains, including the metros. Yeah. So can you give us some introduction about the products? Yeah. Initially, we were a component supplier. Okay. We started with one component, which is called air diffuser, Mm-hmm. which is acting as a air vent for a AC coaches. Okay. Basically, that was a very small product of Right. around 600 rupees Okay. Right. a piece, basically. Okay. And then that was very well appreciated by the railways. Right. Because that was a new design which we have made in aluminum extrusions, basically. Okay. And then the railway officials appreciated and then made us to explore on various similar product.
As I said, the USP was to convert mild steel to a stainless steel product. So we slowly started concentrating on making the inner frames for the windows, small Okay. inner frames for the windows, and then a window itself, which is made of aluminum. Right. And then we started doing the luggage racks, small luggage racks, and then small windows, doors, lavatory windows, etc., which is predominantly a aluminum product. Correct. Basically. So based on the requirement of the railways, we started exploring lot many products like that uh, uh, for basically reducing the weight. So we re-engineered it, reverse engineered it Okay. to see that the coaches having more aesthetics Right. along with the weight reduction. That was our USP, and thereby we have developed it. We got the approval for more than 700 components, but we were always a component supplier till 2008. Okay. Because we developed a lot of components and we supplied a lot of components to Right. railways. Right. So in 2008, we started our own engineering division. Okay. So we started making our own drawings Right. for the railway products. Right. So by seeing our expertise, railway started giving us turnkey contracts, which includes many components, a composite contract, Correct. which includes many components Correct. what we have developed, Correct. and put it in one particular kit, Correct. and then supply as a kit, basically. Okay. So thereby, Kolkata Metro was the first turnkey contract which was done by us, Okay. which includes all these 700 components Right, together, right, basically. right. So we have become a turnkey contractor from a component supplier. Right. Right. So you are basically forward integrated Yeah, from the individual components to the systems. systems. Right. Yeah. यदि हम रेलवे सेक्टर की जो वैल्यू चेन है वो स्टडी करेंगे तो इट स्टार्ट्स विद द कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, जहां पर काफ़ी कम आप देखो तो मार्जिन्स होते हैं, अलग अलग जो कंपोनेंट्स लगते हैं उसका बेसिकली वो मैन्युफैक्चर करते हैं। उसके बाद में सिस्टम इंटीग्रेटर्स आ जाते हैं, यानी अलग अलग ये जो कंपोनेंट्स है उसको एक साथ लेके ये जो सिस्टम इंटीग्रेटर्स है दे कंप्लीटली मैन्युफैक्चर डिफरेंट सिस्टम्स। इसको टर्न की मैन्युफैक्चरर्स या टर्न की इंटीग्रेटर्स भी कहा जाता है। इसके बाद में जो थर्ड आते हैं दे आर बेसिकली द असेंबलर्स, जैसे कि आप देखो तो आईसीएफ हो गया, या इसके अलावा एमसीएफ है, या जो प्राइवेट प्लेयर्स है उसमें बीएमएल जैसी कंपनीज है या तीतागर वैगन जैसी कंपनीज है। सो दिस इज द कंप्लीट वैल्यू चेन ऑफ द रेलवे सेगमेंट। सो यदि आप एयरफ्लो कंपनी की शुरुआत देखोगे तो दे स्टार्टेड एज अ कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, जहां पर कम मार्जिन थे, बट दे हैव फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड एंड देन दे आर करंटली इनटू सिस्टम इंटीग्रेटर स्टेज, एंड प्रोबेबली इन नेक्स्ट 4 to 5 years दे कैन एंटर इनटू अ कंप्लीट असेंबलीज ऑल्सो। एंड ये वैल्यू चेन में यदि आप देखो तो बेसिकली जैसे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर से आप स्केल अप करते हो, जैसे ही आप टर्न की मैन्युफैक्चरर हो जाते हो या आप बेसिकली सिस्टम इंटीग्रेटर हो जाते हो, तो टोटल जो कंपटीशन है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। यहाँ पर मैनेजमेंट ने एग्जांपल दिया था कि दे आर करंटली वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट्स जहाँ पर जो एल्यूमिनियम पैनलिंग करना पड़ता है ट्रेन्स के अंदर, बिकॉज यहाँ पर ग्लोबल एक सिक्योरिटी रिलेटेड मैंडेट है या एक चेंज हुआ है रेगुलेशंस में। और ये जो एल्यूमिनियम पैनलिंग है यहाँ पर यदि आप देखो तो मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली इंडिया में सिर्फ 2 से 3 ही कॉम्पिटिटर्स है। इसके कंपैरिजन में जो कंपोनेंट लेवल का मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन होती है, इसीलिए वहाँ पर मार्जिन भी काफ़ी कम होते हैं। सो एट द टर्न की लेवल यदि आप देखोगे या जो सिस्टम इंटीग्रेटर के लेवल पे, एक तो आपके मार्जिन बेटर हो जाते हैं, आपके वॉल्यूम्स काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं, बिकॉज आपको जो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट मिलता है दैट कॉन्ट्रैक्ट यू गेट फॉर द कंप्लीट कोच, नॉट फॉर द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। बट यहाँ पर चैलेंज क्या है एट द सिस्टम लेवल इंटीग्रेटर, आपका जो वर्किंग कैपिटल है इट एक्चुअली इंक्रीजेस, बिकॉज जो आपको पेमेंट रिसीव होते हैं वो कंप्लीट कोच के मैन्युफैक्चरिंग के बाद होते हैं। इसीलिए कंपोनेंट लेवल के कंपैरिजन में जो सिस्टम इंटीग्रेटर है या जो टर्न की मैन्युफैक्चरर है उसका वर्किंग कैपिटल थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच होता है। लेट्स नाउ मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड द कंपनीज जर्नी फ्रॉम 2009 to 2019, जहां पर विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द रोल ऑफ एयर फ्लोआ एज वेल एज जो सिस्टम असेंबलर्स है बेसिकली, जैसे कि आईसीएफ हो गया, एमसीएफ है, या जो प्राइवेट प्लेयर्स लाइक तीतागर या बीएमएल। So from 2006 to 2009, we were concentrating on Mumbai Railway Vikas Corporation project. Okay. From ICF. Right. There was a lot of traction in that. And after that, that has been shifted to Kolkata Metro project, where we got the first turnkey contract. Correct. And during that particular period, there was a lot of turbulence because of the
the situation in the country till 2014. Right. And then after 2014, we have seen very long vision and clear vision from the government of India. Right. So that has helped us to plan our future for the next 1 decade. Okay. So in 2014, we started a separate facility to manufacture the coaches, rail coach body Okay. by ourselves, Okay. basically. So till 2014, we were basically a custom component supplier and then interior supplier. And then from 2014 onwards, we started supplying the car body also. Okay. So it's a combination of the interiors and the exterior, which is a car body, basically. Okay. So how the supply chain works, if you can explain. So you like develop these components or you develop the systems as a package, and then you, as you said, like you are also starting manufacturing the car bodies. Then directly it goes to the railways or some other modification which happens by your customers. Just wanted to understand how the supply chain or the value chain looks like. Okay, when it comes to the design, it is always a joint design of industry or customer and the industry partners, Right. basically. So most of the product have been evolved like that. When it comes to the car body, most of the design have been executed by the customers, Okay. who is ICF or RCF or MCF or Correct. whatever it is, production units, basically. And we follow their designs, and if there is any modifications or improvements, we will definitely suggest them to go for the improvement, basically. Okay. So when it comes to the upscaling, basically, so when we have done our interiors, it almost consists of 50% of our revenue. And when it comes to the exterior, we also added another 50% of Okay. our company revenue. It's a mix of 50-50 Okay. from 2004 to till 2019, basically. Right. So our revenue was 14 crores in 2014, Right. and then that has been increased to 47 crores in the next 5 years. Okay. So there was a rapid increase during Till that time. 2019. Yeah, 2019. And then during this particular period, there was a lot of new developments happened. Okay. With this the present vision of this particular government, basically. And we started developing the first air-conditioned EMU train for Okay. Mumbai. And then we developed the interiors for IGBT demos. Okay. And then we developed interiors for Sri Lankan demos, which Okay. was exported to Sri Lanka. Right. And we also did the interiors, entire turnkey interiors for Sri Lankan mainline trains, which is almost 99 coaches, Okay. basically. Interesting. And in 2018, we played a vital role in supplying the components for Train 18, which is Vande Bharat Right. interiors, Right. and also the exteriors, Okay. car body. And then in 2021, we got the turnkey contract of design, supply, installation, and commissioning of Mozambique coaches, Okay. which got assembled and commissioned in Mozambique, Okay. Africa. Right. So that has given us a very big breakthrough in our engineering segment. Correct. Now we are in a position to make the entire coach except the wheels and axles. Okay. So, like when you say entire coach, apart from the interior, so what actually goes into making that coach? And is it as it varies basis used by your customer, or they do their some other value addition except putting the wheels and everything when it goes live on the track? We consider this as two parts. One is the furnishing part, and the other one is the shell manufacturing. Okay. Our customers were always car body builders, Okay. coach builders, Right. We can say, like ICF, Integral Coach Yeah. Factory, Yeah. Rail Coach Factory, modern coach factories. So they are our customers, basically, and we supply to them, basically. So when it comes to the interiors, we get contracts in two ways. One is the component supply, Right. which consists of only the supply or supply and installation.
and there is a project contract, which is a turnkey contract, Okay. which includes various components put together, as I earlier highlighted. Right. When it comes to the shell, we give as a kit Okay. underframe, sidewall, roof, and end wall, Okay. and then it get assembled in ICF. Okay. So in a shell division. So assembly is done by the clients. You give the interior separately, shells Yes. separately, and then they basically assemble it. Assemble it Okay. in the factory as of now, and there is always a proposal to have a fully furnished coach Okay. from our facility in Okay. future, and then send it to the customers. Okay. So assembly also can be done by Yes. you. So that is a future Yes. opportunity which lies Yes. with you. Because the requirement is increasing, Right. and railways is also expanding their vendor base Right. in terms of coach in number of coaches, building of number of coaches, basically. Correct. Correct. So thereby that will reduce their inventories and the space. So we will take that opportunity to manufacture it in our facility and then send it to the railways. Got it. अभी हम देखते हैं कि एयरफ्लो का जो मैन्युफैक्चरिंग का पोर्टफोलियो है उसमें कौन कौन से अलग अलग कंपोनेंट्स आते हैं। तो यदि आप देखोगे तो उनके बेसिकली जो एक्सटीरियर रिलेटेड कंपोनेंट्स है या जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो रेलवेज के कोचेस का, उसमें साइड वॉल्स आते हैं, एंड वॉल्स आते हैं, उसके अलावा रूफ का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एंड जो नोज का कोन होता है दैट ऑल्सो दे मैन्युफैक्चर। इंटीरियर्स में यदि आप देखोगे दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डोर्स, विंडोज, सीट्स, लगेज रैक्स, पैनल्स, टॉयलेट्स, लाइटिंग एंड एचवैक सिस्टम्स। तो कंपनी बेसिकली यदि आप देखो तो पहले जो एलएचबी कोचेस है उसका इंटीरियर और एक्सटीरियर करती थी, बट देन दे हैव स्लोली मूव टू वंदे भारत ट्रेन्स, एंड आगे जाके आप देखोगे तो वंदे भारत का स्लीपर वर्जन भी आने वाला है, एंड इसके अलावा एक अमृत भारत करके भी कोच आने वाला है या ट्रेन आने वाली है। तो अमृत भारत इज बेसिकली अ कॉस्ट इफेक्टिव वर्जन ऑफ द वंदे भारत। अमृत भारत यदि आप देखोगे तो उसमें नॉन एसी ट्रेन है वो, एंड एक इकोनॉमिक क्लास का ट्रेन है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम्स होगी अमृत भारत के दैट विल बी सिग्निफिकेंटली हायर कंपेयर टू वंदे भारत, एंड यहाँ पर उनको काफी बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिल सकते हैं। और करंटली ऑल्सो यदि आप देखो तो कंपनी इज एग्जीक्यूटिंग डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटेड टू वंदे भारत एज वेल एज अमृत भारत। यहाँ पर यदि आप देखो तो वंदे भारत की जो ट्रेन है उसके जो इंटीरियर्स है वहाँ पर बेसिकली वैल्यू एडिशन हुआ है, और इसी वजह से जो एलएचबी कोचेस थे विच एक्चुअली गॉट इंट्रोड्यूस इन ईयर 2000, उसके कंपैरिजन में वंदे भारत एज वेल एज अमृत भारत में जो मार्जिन्स है दैट आर द बेटर मार्जिन्स बिकॉज ऑफ द हायर वैल्यू एडिशन इन द इंटीरियर पार्ट्स। सो एयरफ्लो ये जो कंपनी है वो इंडियन रेलवेज के लिए मैन्युफैक्चर करती है, बट इसके अलावा यदि आप देखोगे तो दे हैव एग्जीक्यूटेड 2 एक्सपोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स ऑल्सो। एक जो है उनका वो मोजम्बिक के लिए आप देखोगे तो एक केप गेज करके उनकी जो ट्रेन है उसके लिए उन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जीक्यूट किया था, एंड सेकेंड एक्सपोर्ट रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट दे हैव एग्जीक्यूटेड, दिस वॉज द टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द श्रीलंकन डीएमयू ट्रेन। तो अब तक यदि आप देखो तो कंपनी का जो प्रेजेंस था वो बेसिकली रेलवेज के इंटीरियर्स एज वेल एज एक्सटीरियर के लिए था, बट गोइंग अहेड दे विल बी ऑल्सो एंटरिंग इनटू सर्वेलेंस सिस्टम्स फॉर द ट्रेन्स। इसके अलावा दे विल बी ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग सम सिस्टम लाइक अ कवच, but this system is not only for the collision avoidance, but this is a end-to-end system which is basically integrated safety platform, and और एक सिस्टम में वो एंटर कर रहे हैं which are the fire suppression systems। बट यदि आप देखो तो कंपनी का जो कंप्लीट प्रेजेंस था 2020 तक वो सिर्फ रेलवे से ही था, उनका बेसिकली एक सिंगल क्लाइंट था और 100% डिपेंडेंसी था, और उसके बाद में कोविड आ गया एंड उनका जो कंप्लीट बिजनेस है विच गॉट डिसरप्टेड, एंड जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 2014 में उनका सिर्फ 14 करोड़ का रेवेन्यू था, दे हैव स्केल्ड 20 टाइम्स इन नेक्स्ट 5 years, एंड देन they got actually a major hit due to COVID. But out of the COVID episode, they have learned and they have started diversifying their business. And उनका business यदि आप currently देखोगे तो they have entered into 2 new segments. First जो है basically वो aerospace and defense का है, and second is related to renewable power. So let's now understand from the management what is their vision related to the defense segment, which is a new segment for the company. Now we are majorly concentrating on simulator systems, making a simulator for the AMCA, Advanced Medium Combat Aircraft, LCA Tejas, Right. and Jaguar, and many other simulators, which is a niche market, and very few partners are there in India for Make in India initiation. Right. And we are also making the artillery tanks body for the defense. And we are now developing the different type of drone systems and the anti-drone systems, including the autonomous drone. Predominantly to concentrate on 2 major projects to start with. One is for the autonomous drone,
for various industrial and defense applications. Okay. And also we are focusing on microwave high power laser systems for anti-drone activities. Okay. Basically. सो आप सोच रहे होगे कि ये जो रेलवे मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है वो डिफेंस सेक्टर में क्यों एंटर कर रही है। तो यहाँ पर बेसिकली दो पार्ट्स है। डिफेंस सेक्टर में एयरफ्लो विल बी फोकसिंग मेजरली ऑन द मैन्युफैक्चरिंग साइड एंड देयर पार्टनर विल बी गिविंग देम द टेक्नोलॉजी। वीडियो में यदि आप देखोगे तो मिस्टर मणिकंदन हैज सेड कि जो आर्टिलरी टैंक्स है उसका जो हल सेक्शन है दैट दिस कंपनी विल बी मैन्युफैक्चरिंग। तो यदि आप देखोगे तो ऑलरेडी जो एयरफ्लो है उसका जो प्रेजेंस है वो ट्रेन के इंटीरियर एज वेल एक्सटीरियर में था। एक्सटीरियर में उन्होंने मेटलर्जी रिलेटेड जो काम है वो ऑलरेडी किया है एंड दैट्स वाई दे आर एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स द डिफेंस विच इज़ द नेचुरल प्रोग्रेशन टू देम। बिकॉज जो डिफेंस एंड एरोस्पेस का सेगमेंट है इसका यदि आप बाकी प्लेयर्स के साथ भी कोरिलेशन करोगे तो जनरली जो ऑटो एंसिलरी कंपनी है जो प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है देन दे एंटर इनटू एरोस्पेस सेगमेंट। और ऐसा ही बाकी प्लेयर्स ने भी किया है। यदि आप देखोगे तो सनसेरा इंजीनियरिंग जो है they were also auto parts manufacturers and currently entering into aerospace. Same has happened with another company with the name JK Many. Basically ये जो कंपनी है वो रेमंड लिमिटेड के अंदर आती है। यदि आप देखोगे they were also focusing initially into commercial vehicles and different vehicles जो ऑटो कंपोनेंट या ऑटो एंसिलरी कंपनी थी एंड उनका करंटली जो रेवेन्यूज है दे हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स एरोस्पेस बिकॉज एरोस्पेस में काफ़ी ज़्यादा प्रिसीजन लगता है compared to auto parts manufacturing. यदि आप देखो तो कंपनी इज ऑल्सो एंटरिंग इन टू अ ड्रोन सेगमेंट एज वेल एज एंटी ड्रोन सेगमेंट। तो ड्रोन्स में बेसिकली दे हैव ऑलरेडी डेवलप्ड अ ड्रोन विच इज़ अ कामाकाजी बेस्ड ड्रोन, यानी जो ड्रोन है वो टारगेट को हिट करके इट गेट्स एक्सप्लोड एंड देन इट डिस्ट्रक्ट द टारगेट। एंड दूसरा टाइप का और एक ड्रोन होता है विच इज़ द टेथरिंग ड्रोन। बेसिकली इट इज यूज फॉर द सर्विलेंस पर्पज। सो ये जो थेथरिंग ड्रोन है करंटली द कंपनी इज इनटू द डिजाइनिंग फेज एंड आगे जाके कंपनी विल बी डेवलपिंग दिस टाइप ऑफ अ ड्रोन। इसके अलावा कंपनी इज ऑल्सो एंटरिंग इनटू एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी जहां पर उनका जो टेक्नोलॉजी पार्टनर होगा इसके बारे में हम आगे जाके वीडियो में डिस्कस करेंगे। दे विल बी प्रोवाइडिंग द टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू लेजर बेस्ड एंटी ड्रोन। तो यदि आप रिसेंट के जो वॉर्स हो रहे हैं उसको केयरफुली स्टडी करोगे जैसे कि करंटली ईरान एंड यूएस के बीच में चल रहा है तो ईरान के जो ड्रोन्स है विच वेर ओनली $20,000 ड्रोन पर ड्रोन का कॉस्ट है वो डिस्ट्रक्ट करने के लिए या डिस्ट्रॉय करने के लिए यूएस ने एक पैट्रियट करके जो सिस्टम है उसका यूज़ किया था और उसका जो पर मिसाइल है एंटी ड्रोन मिसाइल विच कॉस्टेड देम अबाउट $4 million। यानी यदि आप जो रेशो देखोगे दैट इज 100:1 एंड इसीलिए ये जो बड़ी सिस्टम्स है बेसिकली दे आर नॉट मच यूजफुल बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी कॉस्टली इकोनॉमिकली। इसीलिए ये जो लेज़र बेस्ड टेक्नोलॉजी है इट इज़ अ फ्यूचर टेक्नोलॉजी बिकॉज विद दिस न्यू लेज़र टेक्नोलॉजी विच जनरली ऑपरेट्स ऑन द इलेक्ट्रिसिटी इससे आपको एक ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए यू वोंट इवन नीड ₹1,000। और ऐसे ही जो टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी काम किया है। इसका नाम है काली या दुर्गा 1 करके जो बेसिकली ये टेक्नोलॉजी है एंड उसका सेकेंड वर्जन भी आया है दुर्गा 2 करके। यहाँ पर रेंज जो है वो थोड़ी बढ़ाई है एंड इसके अलावा जो एनर्जी का जो किलोवाट है दैट इज एक्चुअली इंक्रीज अप टू 100 किलोवाट्स। सो सिमिलर टेक्नोलॉजी पे ये कंपनी भी काम कर रही है एंड अकॉर्डिंग टू देम दे आर सेइंग कि जो टोटल रेंज है दे विल बी वर्किंग अबाउट 2000 to 5000 मीटर्स के लिए जो डिस्ट्रक्शन का रेंज होगा ये लेजर सिस्टम का जहाँ पर बेसिकली हीट एनर्जी से दे विल बी डिस्ट्रॉइंग दिस ड्रोन्स। इसकी रिलेटेड करंटली दे आर वर्किंग। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट उनका जो टेक्नोलॉजिकल पार्टनर है जो कंपनी का नाम है बिग बैंग बूम एंड यहाँ पर ये जो जॉइंट वेंचर हुआ है इसमें एयरफ्लो विल बी होल्डिंग 51% स्टेक एंड जो बिग बैंग बूम है बेसिकली दे विल बी होल्डिंग 49% स्टेक। सो लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस कंपनी फ्रॉम द मैनेजमेंट। I strongly believe that knowledge can be transferred by innovation, Right. Or by acquisition. Right. Basically. Right. So we have our team. Either do you do it on your on own our own, or we need look to for the acquire. right partner. Exactly. Yeah. Exactly. So when it comes to the innovation part, we are doing a lot of innovation with our own team. We have Correct. our expertise, and we also got many skill minds in the industries. Right. And our independent directors are also playing a vital role in that because Right. they are one of the masters in the industries basically, and we have an advisors, Right. very good advisors in the railway segment who have really performed so well in the industry basically. Correct. So we have aligned with them and we get the advice from them, and we are innovating a lot many products with their support. And also we are acquiring certain
companies Correct. who is already possessing the technology. Right. So both in railways and the defense, basically. So thereby we may expect 2-3 acquisitions maybe in the later future, majorly to get the technology Okay. and to upscale our business, basically. And when it comes to the defense, we know Big Bang Boom for the last almost 7 years, Okay. and we started interacting with them since 2019, Okay. 20. So it's not a new company for you. No, Okay. it's not a new company. Okay. We know the promoters, we know the company, the Right. growth of the company, and the knowledge of the company. Because I see the actual product. It's not Okay. just a The lab new kind of a grown, startup. yeah, Right. startup. They have delivered it. Okay. They have in fact they are serving the country right now in a big way. Okay. In fact, we are very much proud of the companies like that. Right. Right. Young company doing very well for the country, basically. Right. Right. So since we know each other quite long time, and this initiation, we have a very good synergy. The reason we have aligned is basically we have a very strong manufacturing base, Okay. and they have got a very good technology base. So we just want to align together, set up a JV, so that their technology base and our manufacturing base can align and then give us a very good synergy Right. to make it happen in a shorter future. And the selection of the project is also plays a vital role. We have selected a very good program, which is going to be the future, and it's very important for the security of our nation. Right. Basically. Right. Right. So we are aligned for this 2 program initially, but at least we have a plan to go for at least another 3 to 4 programs Very interesting. along with this. So I strongly believe that we are expanding our technology base, our R&D base, by acquiring certain companies. सो करंटली एयरफ्लो का आप टोटल ऑर्डर बुक देखोगे तो लगभग 500 करोड़ के आसपास है. इसमें से 60 to 65 करोड़ का जो ऑर्डर्स थे वो डिफेंस रिलेटेड थे और बाकी जो ऑर्डर बुक है वो उनके रेलवे रिलेटेड सेगमेंट की थी. बट आगे जाके इन 2027 दे हैव गाइडेड कि उनके जो रेवेन्यूज करंटली लगभग 315 करोड़ के रेवेन्यूज उन्होंने 2026 फाइनेंशियल ईयर में पोस्ट किए थे, दैट कैन इंक्रीज अप टू 500 करोड़. एंड ये 500 करोड़ में से लगभग 20 to 30% जो होगा वो डिफेंस रिलेटेड उनके जो रेवेन्यूज है वो आ सकते हैं. एंड यहाँ पर जो मार्जिन है वो भी एक्सपांड हो सकते हैं बिकॉज डिफेंस एंड एरोस्पेस में बेटर मार्जिन है कंपेयर टू यदि आप देखो तो रेलवेज में. तो एयरफ्लो और रेल टेक्नोलॉजी जैसे ही अलग अलग जो इंटरेस्टिंग कंपनीज है उनको हम अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करते हैं. एंड वी हैव आइडेंटिफाइड दिस एसएमई एंड माइक्रो कैप स्मॉल कैप कंपनीज इन आवर 2 सर्विसेज. बेसिकली हमारे 2 अलग अलग मॉडल पोर्टफोलियो की सर्विसेज है. एक जो टाइनी टाइटन्स है दैट इज स्पेसिफिकली फॉर द एसएमई कंपनीज. करंटली ये पोर्टफोलियो में लगभग 13 कंपनीज है एंड वी आर प्लानिंग टू इंक्रीज इट अप टू 20 कंपनीज, जहां पर अलग अलग जो इनिशियल स्टेज पे या ग्रोथ स्टेज पे अलग अलग कंपनीज को हमने आइडेंटिफाई किया है. सिमिलरली एक इमर्जिंग टाइटन्स करके भी हमारा एक सर्विस है. वी आर अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और ये जो इमर्जिंग टाइटन सर्विस है इसमें करंटली हमने 27 स्टॉक्स को रिकमेंड किया है. लगभग 60% ऑफ द जो पोर्टफोलियो है दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल कैप्स एंड रिमेनिंग जो 40% है वो मिड कैप्स है. तो इमर्जिंग टाइटन्स में लगभग वी हैव द कंपनी स्टार्टिंग फ्रॉम 500 करोड़ मार्केट कैप अप टू 10 to 15,000 करोड़ मार्केट कैप. वाइल कंपेयर टू दैट जो टाइनी टाइटन्स का पोर्टफोलियो है जो एक एसएमई एक्सक्लूसिव पोर्टफोलियो है वहां पे जनरली काफी छोटी कंपनीज है स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to 300 करोड़ मार्केट कैप एंड अप टू 1000 करोड़ मार्केट कैप. इसके अलावा वी विल बी प्लानिंग अ डिटेल वेबिनार ऑन द डिफेंस सेक्टर. नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी अनाउंसिंग द डेट फॉर दिस डिटेल डिफेंस रिलेटेड वेबिनार जहां पे विल बी कवरिंग ऑलमोस्ट अबाउट 20 कंपनीज एंड काफी प्राइवेट कंपनीज जो है दैट ऑल्सो विल बी डिस्कसिंग. सो ये जो डिफेंस रिलेटेड वेबिनार होगा उसमें वी विल बी फोकसिंग ऑन द मॉडर्न वॉरफेयर. रिसेंटली जो वॉर्स हुआ है उसमें क्या चेंज हुआ है या क्या स्ट्रैटेजी में या टेक्नोलॉजी वाइज चेंज हो रहा है कंपेयर टू जो पहले के वॉर्स थे. एंड इंडिया में जो डिफेंस का इकोसिस्टम है वो रैपिडली कैसे इवॉल्व हो रहा है एंड कौन कौन से कंपनीज को यहाँ पर बेनिफिट होगा. ऑल दिस थिंग्स विल बी कवरिंग इन अवर डिटेल डिफेंस रिलेटेड वेबिनार. तो जरूर आप ये जो वेबिनार है उसको ज्वाइन कर सकते हो. नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी अनाउंसिंग द डेट फॉर द सेम. तो यदि आपको ये एयरफ्लो और रेल टेक्नोलॉजी का डिटेल वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और ऐसे ही जो डिटेल वीडियो है मैं हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूँ, तो जरूर ये जो वीडियो है वो देखते रहिए.